तो IIT JAM मैथमेटिक्स का इस बार का सवाल है x1 x2 इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है रैंडम वेरिएबल का, और x एंड y कुछ इस तरीके से बयां होता है। x बार एन स्क्वायर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3/√3/10 को हमें निकालना है। ठीक है, तो x बार ये सब दिया हुआ है, सो x बार follows a normal distribution and n equal to 9 में ये सिग्मा स्क्वायर बाई सिर्फ 9 होगा। y also follow this, so importantly y is independent of x1 to x9, y is independent of x bar and a square also, so x bar is vertical to a square. Okay, normal sample, so it's not true for any other distribution के लिए in this universe. So this is exactly why that यहाँ पर अगर हम लोग कहेंगे कि t distribution exist only for normal population के लिए। ठीक है, फिर हम लोग distribution of x bar minus y भी निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, a minus b is also follows this, so normal distribution इसके लिए रहेगा mu1 minus mu2 sigma 1 square plus sigma 2 square, so mu minus by 0, so sigma square by 9 plus sigma square 10 sigma square by 9, so x minus y follow करेगा normal distribution with 10 sigma square by 9। ठीक है, so z equal to x bar minus y root over 10 sigma square by 9। 10 sigma, so the distribution of a square क्या आएगा? Chi square with n minus 1, so a square equal to 1 by n summation of xi minus x bar square, so 9a square यहाँ से चला गया तो x8 square by sigma square, so sigma 8 square df हो गया n minus 1 तो 8। So to construct a t distribution directly we can write it like this, so the final answer is t distribution with 8 t8। Okay, so it's actually look like z. Okay, so this is the first answer to the question.